जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू TATHAGATGSMCQ। तो आज होचे OSSC CGL मेंस रो थर्ड मॉक टेस्ट 50 क्वेश्चन जेतरे रहइबो। ऑलरेडी हम दुईटा मॉक टेस्ट कंप्लीट कर सारछे। गोटे 50 क्वेश्चंस अराउंड गोटे 100 क्वेश्चन अराउंड करि सारिछे। देन एटा नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस रहइबो। मिक्स रहइबो, इकोनॉमिक्स हला, जियोग्राफी हला, पॉलिटी, हिस्ट्री सब जाको मिक्स रहइबो। ता सहित किछि क्वेश्चंस रहिला जोटा कि म्यूजिक ऊपर रहउची बा आर्ट एंड कल्चर ऊपर रहउची। जेतु टीसीएस करियो मे बी हमें गोटे दिटा क्वेश्चन देखि परिबा म्यूजिक ऊपर बा जो इंस्ट्रूमेंट रहिला म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बा पॉपुलर जे पर्सन अछंती को इंस्ट्रूमेंट तांको ऊपर मध्ये गोटे क्वेश्चन हमें देखि परिबा। जेंता आरआई मेंस रे गोटे आस्तला घराना ऊपर क्वेश्चन आसी देला। आई थिंक कथक कोथिरो को दिटा घराना रो क्रिएट करा जायछि ता ऊपर क्वेश्चन आसी देला। तो स्टार्ट करिबो। फर्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल कैरिड आउट? राइट आंसर होबो 1905। तो लॉर्ड कर्जन को टाइम रे एटा करा जायतला। तो बंगाल टाको ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल रे पार्टीशन करा जायतला। जेमति कि ईस्ट बंगाल रे मुस्लिम्स अधिका थिले, वेस्ट बंगाल रे अधिका हिंदूस थिले। तो पार्टीशन करा जायतला जोटा कि इवेंचुअली स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हेतला। आउ स्वदेशी मूवमेंट रे कौन कौन रहिला, सुराट स्प्लिट, तो एसब जिनस गुडी कटे भलसे देखिके जीवो। बेसी में डिस्कशन करबानी। द मोस्ट फेमस एजुकेशनल सेंटर ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वाज, राइट आंसर होबो तक्षशिला। तो तक्षशिला सेतबेले गोटे बड़ लार्ज एजुकेशन हब थिला मौर्यन पीरियड टाइम रे। ठीक अछि। Which of the following statements is or are correct with respect to the civil disobedience movement in Odisha? Rani Bhagyavati, the Pattamahasi of Kujanga, along with 500 women satyagrahis, violated the salt law in June 1930. Second, Pandit Nilakantha Das led the salt satyagraha in Puri district, while Vishwanath Das and Niranjan Bhatnaik led the movement in the Ganjam district. तो एतरे को स्टेटमेंट दिटा ठीक अच्छी बा गोटे ठीक अच्छी कोटा भूल अच्छी। करेक्ट आंसर एट हम बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सॉरी ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर। ठीक है। द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, करेक्ट आंसर हम मौलाना अबुल कलाम आजाद। फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया रो एजुकेशन मिनिस्टर से थिले। हु इज कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ इंपीरियल चोला डायनेस्टी ऑफ तांजोर? करेक्ट आंसर होबो तो विजयया जे कि चोला डायनेस्टी रो फाउंडर बोली कुहा जाय। सिमुका थिले कहारो सातवाहन रो। ठीक है। तो एक्ट ऑफ 1858 रिजल्टेड इन द एंड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स? करेक्ट आंसर होबो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एटा केबे हेतला 1857 रे सिपाही विद्रोह हेतला। तापरे तो मानकर ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा जाई कि ब्रिटिश क्राउन इंडिया टाको ता अंडर को नैथिला। तो ब्रिटिश रो कंपनी रूल टा एंड हेतला। ठीक अछि। Who among the following introduced the doctrine of subsidiary alliance in 1798? तो करेक्ट आंसर होबो लॉर्ड वेलेस्ली। तो वेलेस्ली जे कि 1798 रे सब्सिडियरी अलायंस करिथिले। आउट क्वेश्चन मध्ये आरो मॉक टेस्ट में डिस्कशन करिथिले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डी फॉर डॉक्ट्रिन, डी फॉर डेलहाउसी। ठीक अछि। नॉन परमानेंट सेटलमेंट हैला, रिंग फेंस पॉलिसी हैला, ए गुडी को के करिते तांको पर मध्ये क्वेश्चंस बारंबार आसे। से गुडी को भलसे तमे देखिकि जीवो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जीवा। Which of the following Bahmani rulers is referred to as a saint? तो करेक्ट आंसर होबो अहमद शाह फर्स्ट। तबे किछि म्यूजिकल क्वेश्चन ऊपर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आउ पॉपुलर पर्सनालिटी तांको ऊपर क्वेश्चंस हम देखिबा। जाकिर हुसैन इज रिलेटेड टू व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? करेक्ट आंसर होबो तबला। ठीक है। तो अन्य इंपोर्टेंट पर्सनालिटी जे रहिले लातिफ खान, किसान महाराजा, सुखविंदर सिंह, अल्लाह रखा खान। तो एमती डिफरेंट पर्सनालिटीज मध्ये अछन। से माना ना टिके जस्ट ओवरलुक कर देतो। मे बी गोटे किबा दुईटा क्वेश्चन एथरे आसी पारे, बेसी नो। पंडित रविशंकर इज एसोसिएटेड विथ व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? करेक्ट आंसर होबो सितार। तो बहुत सारा टीसीएस एग्जाम रे क्वेश्चन गुडी को रिपीट हुए, तो सेति पई गुडी को म ऐड करछि।
Ramjad Ali Khan is associated with which musical instrument? Ramjad Ali Khan Sarod Saita associated thile. Which musical instrument is Bismillah Khan related? Right answer haba Sehnai. एंको 2001 मसीह भारत रत्न मध्य मिलिथिला. Pannalal Ghosh is associated with which musical instrument? Right answer above flute. Shiv Kumar Sharma is related to which musical instrument? Right answer above santur. ठीक है सब जा क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो नोट बनै नबो इजी होबो मन रखियो. TN Krishnan is associated with which musical instrument? Right answer above violin. Ustad Sadiq Ali Khan or Sad Ali Khan are related to which musical instrument? Right answer above Rudra Veena. Dr. Jagdish Singh is related to which musical instrument? Right answer above Mridangam. Which musical instrument is Ustad Rahman Khan related? Right answer above Pakhwaja. Which musical instrument is Ustad Bindu Khan related? Right answer above stringed instrument. Niruswami Pillai is associated with which musical instrument? Correct answer above Nadaswam. Which legislation forms the legal basis for the creation and operation of the Central Administrative Tribunal? Correct answer above the Administrative Tribunals Act 1985. Which of the following articles of the Indian Constitution directs the state to ensure equal pay for equal work for both men and women? Correct answer above Article 39D. What is the main purpose of the India-Mercosur Preferential Trade Agreement discussions held in New Delhi on 16th October 2025? Correct answer about to promote trade and investment. The India-Mercosur PTA केबे साइन कराइतला? करेक्ट आंसर अब 2009 मसिया. तो इकोनॉमिक क्वेश्चन या ऊपर मध्य आसी पारे. Under the Union Budget 2025-2026, the FDI limit in the insurance sector was increased from the correct answer number 74% to 100%. The insurance sector रे इटा 100% already करी दिया जाइए. अनेक एग्जाम में मध्य क्वेश्चन रिपीट होइए तो मे भी क्वेश्चन हमनका इकोनॉमी सेक्शन आसी पारे. Which institution released the policy report titled Internationalization of Higher Education in India, Prospects, Potential and Policy Recommendations in December 2025? तो ओनली एजुकेशन ऊपर के भी पॉलिसी रिपोर्ट देई परिबो से होची नीति आयोग. ठीक अछि तुम गेस करके नीति आयोग करि परिबो. Which Harpan city around 2500 before Common Era is noted for its dockyard indicating advanced architectural planning for trade? Correct answer अब लोथाल. लोथाल जोटा कि हमरा गुजरात रे अछि. ठीक अछि एंड एबे देखिबो दी तमे सोशल मीडिया रे बहुत सारा पाकिस्तानी से माने क्लेम करूचंती कि इंडस वैली सिविलाइजेशन तांकर सिविलाइजेशन बोली. ठीक अछि इवन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मध्य सेटा को काउंटर करिबा पई एक्टिवली इंडस वैली सिविलाइजेशन ऊपर डिफरेंट व्यूज डिफरेंट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन ने प्रोवाइड करो छे. ठीक अछि तमे क्लोजली फॉलो करथियो देन तमे जानि परथियो. आईबीसी ऊपर तमनकर गोटे दिटा क्वेश्चन आसी पारे जेतु ऑलवेज सेटा हमर सिविलाइजेशन ने जाउची ता से तो सोशल मीडिया बॉज रे मते सेटा रहलानी तो आईबीसी ऊपर तमने गोटे दिटा क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करि पारो. According to the Banking Laws Amendment Act 2025, the threshold for substantial interest in a bank was revised from 5 lakh to which of the following amounts? तो correct answer होगा 2 crore. तो 5 लाख रु 2 कोटी को इंक्रीज करा जायछि.
The splitting of the ancient Indo-Brahma river into the Indus, Ganga, Brahmaputra drainage systems is believed to have been primarily caused by which geological event? Pleistocene of Hival. When was the India-European Free Trade Association Trade and Economic Partnership Agreement signed, which came into effect on 1st October 2025? तो एता कथा पचारिछि तो केबे एटा साइन करा जायतला करेक्ट आंसर हबो मार्च 2024 एटा को साइन करा जायतला. The summer solstice occurs when the sun is directly overhead at which of the following latitudes? Sun कोड थिला बेले occur हेता सेटा करेक्ट आंसर हबो Tropic of Cancer. Option D हबो राइट आंसर. In 2025, which Indian High Court issued the pioneering policy regarding the use of AI tools in district judiciary, becoming the first in the country to frame comprehensive guidelines for AI use in judicial work. तो करेक्ट आंसर हबो केरला हाई कोर्ट. न्यूज रे मध्ये थिला एटा बहुत सारा क्वेश्चन मध्ये आसी सारी ऑलरेडी. In which of the following states is the slash and burn agriculture known as कुरुवा? तो करेक्ट आंसर हबो झारखंड. टीसीएस रे गोटे क्वेश्चन मध्ये आसे तोइला चाष ऊपर कि तोइला चाष को डिस्ट्रिक्ट रे ओडिसा रे को डिस्ट्रिक्ट रे ताको कुआ जाय. तो स्लैश एंड बर्न जो जा पोडु चाष रहिला से गुडी को डिफरेंट नेम गुडी को मध्ये नेशनल लेवल रे डिस्ट्रिक्ट लेवल रे आउता सहित इंटरनेशनल लेवल रे मध्ये देखि कि जीवो. Which of the following prominent leaders led the बरदोली सत्याग्रह 1928? तो बरदोली सत्याग्रह बहुत पॉपुलर मूवमेंट और सेटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्ये बहुत सारा एग्जाम आसे. तो करेक्ट आंसर एटी हबो सरदार वल्लभ भाई पटेल. तो सरदार टाइटल टा तांको एठी मिलितला जो बरदोली रो ओमेन थिले से माने सरदार टाइटल टा तांको देथिले. ठीक अछि 1928 रे टा हेतला. Which of the following is a tertiary activity? Shoe shining, extracting minerals, steel making, metal working. तो करेक्ट आंसर हबो shoe shining. ठीक अछि tertiary activity गुडा कहला सर्विसेस रे जाउची. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हबो. The group of 40 who advised and assisted the Sultan in administrating the Delhi Sultanate was established by which of the following rulers? Correct answer about Iltutmish. तो चाहलगानी बा ग्रुप ऑफ 40 people मध्ये कहा जाए तो किए सेटा स्टार्ट करिथिले? Which of the following administrative innovation is attributed to Alauddin Khilji's reign? तो अलाउद्दीन खिलजी को रेन रे फर्स्ट हला तांकर जो डेक्कन इन्वेजन थिबो देवगिरी को जोटी से बहुत सारा प्लंडर करथिबे. देन सेकंड जिंस हला मार्केट रिफॉर्म्स आउ दाग सिस्टम टा जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट. ठीक अछि सेति पई सेटा स्मूथली तांको टाइम रे से तांका राजनीति रे चालुथिबो. ठीक अछि तो करेक्ट आंसर एठी हबो द रेगुलेशन ऑफ मार्केट prices and rationing. After a constitution amendment bill relating to the DPSP is passed by the parliament, what is the next mandatory constitutional step for it to become a law? तो नेक्स्ट स्टेप टा कोन जदी पार्लियामेंट लॉ टा को पास करूची. ठीक अछि क्वेश्चन केते बड रहउची किंतु सिंपल क्वेश्चन आंसर होची सिंपल. से कोची कि पार्लियामेंट बिल टा को पास कर दला डीपीएसपी रिलेटेड. देन नेक्स्ट से एक्ट होबा पई कोन करबा को पड़ी. तो नेक्स्ट लागी तांको रेसिडेंट असेंट देबे. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हबो करेक्ट आंसर रेसिडेंट असेंट देले. Who among the following was a prominent disciple of Ramanuja's Sri Vaishnava tradition who played a significant role in spreading its bhakti teachings to North India? Correct answer about Ramananda. Which of the following correctly represents the three-tier structure of the Council of Ministers? तो Council of Ministers केमिति पावर स्ट्रक्चर टा रहउची. करेक्ट आंसर हबो कैबिनेट मिनिस्टर फर्स्ट, देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट आसीबो, देन डेप्यूटी मिनिस्टर आसीबो. बुझि पला. Which provision addresses citizenship for persons who migrated from Pakistan before India's constitution commencement? Correct answer बेटी Article 6. Citizenship, fundamental right, fundamental duties, then parliament ऊपर
देन एससी देन एससी एति गुड़िकटे भलसे देखि देखि जीव तापर मोस्टली तुम मानक कवर हो क्वेश्चन गुड़िक ठीक अच्छे Which of the following island groups in India is known to have an active volcano on barren island? Andaman and Nicobar Island, Lakshadweep Island, Minicoy Island, Rameswaram Island. Correct answer ba option A, Andaman Nicobar Island. Which of the following introduced diarchy by dividing subjects into reserved and transferred list? तो को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट डायरकी इंट्रोड्यूस करथला करेक्ट आंसर हबो 1919 ऑप्शन डी हबो करेक्ट आंसर In the Chola Empire, the tax-free lands donated to Brahmins where they settled were known as तो अग्रहारम ताकू कहा जाए जोटा कि टैक्स फ्री लैंड ब्राह्मण मानन को दिया जाउतला चोला एम्पायर टाइम रे Who among the following is not directly associated with the प्रार्थना समाज करेक्ट आंसर हबो देवेंद्रनाथ टागोर तो तत्वबोधिनी सभा ता रिलेटेड होचंती त के करथिले ताको देवेंद्रनाथ टागोर कहिथिले ता सहित जबे 1839 रे ब्रह्म समाज डिवाइड हेतला त आदि ब्रह्म समाज रहितला देवेंद्रनाथ टागोर को पाखरे लास्ट मॉक टेस्ट मध्ये हम डिस्कशन करथिले केशव चंद्र सेन को ऊपर डिस्कशन भलसे करथिले आ देवेंद्रनाथ टागोर को ऊपर मध्ये करथिले In 2025, which city topped the National Air Quality Index released for major Indian cities? The correct answer is Shillong. So Shillong top करिथला National Air Quality Index रे. Between 2001 and 2011, the male-female gap in the literacy rate of India became zero, increased, remained the same, decreased. तो करेक्ट आंसर हबो डिक्रीज्ड लिटरेसी रेट ता जो गैप रहउची सेटा मेल फीमेल भितर डिक्रीज हेतिला आगु मध्ये नेक्स्ट 2027 सेंसस रे मध्ये डिक्रीजिंग हबो In 2025 which country officially became the 19th state member of the International Union for Conservation of Nature Tuvalu Maldives Nauru India तो करेक्ट आंसर हबो तुभालु जे 90th मेंबर बोली डिक्लेयर करा जायतला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड द बोडो डोगरी मैथिली सांताली टू द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो करेक्ट आंसर हबो 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 जोथि बोडो डोगरी मैथिली सांताली को ऐड करा जायतला Which of the following cabinet committees is not headed by the Prime Minister? The correct answer is Cabinet Committee on Parliamentary Affairs. Affairs rochete ठीक है Now total cabinet committee केते 08 बा 8टा सेतरो 6टा प्राइम मिनिस्टर को अंडर रे रहइबो दीटा रहउची होम मिनिस्टर को अंडर रे गोटे हला कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स आ गोटे हला सेकंड वालाटा कैबिनेट कमिटी ऑन अकोमोडेशन ठीक है दीटा जिंस होम मिनिस्टर अंडर रहउची 6टा जिंस प्राइम मिनिस्टर को अंडर रे रहउची Under which article does the Supreme Court have the power of judicial review? तो सुप्रीम कोर्ट रो को आर्टिकल प्रोवाइड करूची जुडिशियल रिव्यू करेक्ट आंसर बा आर्टिकल 32 हाई कोर्ट वाला जिंस हला आर्टिकल 226 हबो 32 हबो सुप्रीम कोर्ट न जाय तो ये थिला आज 50 क्वेश्चंस हम डिस्कशन करि से थर्ड मॉक टेस्ट कंप्लीट करि सरचे तो नेक्स्ट एमटी मॉक टेस्ट त मानकर आसीबो सेति पई जदी चैनल नुआ छ सब्सक्राइब कर नबो तो आज भी एतिकी जय जगन्नाथ।